Now question number 7. Is it true that for any sets A and B, PA, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B? Justify your answer. इसमें क्या करना है आपको, दो सेट्स लेने हैं ए और बी. आप अपनी मर्जी से जो भी सेट्स चाहे मान सकते हैं. फिर आपको ए का पावर सेट निकालना है, बी का पावर सेट निकालना है, उसका उसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये चेक करना है. फिर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर उसका पावर सेट निकालना है. और अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल आते हैं दैट इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू. पावर सेट आपको याद ही होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट. नाउ कम टू द क्वेश्चन. लेट A is equals to 1, 2. B is equals to 2, 3. And A union B is equals to 1, 2. 2 already आ चुका है. Only 3. So it is A, it is B, it is A union B. Now we have to find power set of A, power set of B and power set of A union B. Power set means collection of all the subsets of a given set. So, power set of A. Power set of A is equals to 1, 2, 1, 2 and 5. And collection of all these subsets. So, it is a power set of A. Now, power set of B. It will be 2, 3, 2, 3 and 5. Collection of all the subsets of a given set. Now power set of A union B. It will be 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3 and 5, and collection of all these subsets. So let us see, is PA union PB. What is PA union PB? So find PA union PB. It is 1, 2. First of all, write all the elements of PA. It will be 1, 2, 1, 2 and 5. Now come to elements of PB. 2 is already here, 3 is not there. So write 3. 2 is already there, 3 is there. Now 2, 3. And 5 is already there, so no need to write 5. Now check. PA union B is equals to PA union PB? No. Why? Because 3, 1 and 1, 2, 3 are not in the PA union PB. So we can say PA union PB is not equals to PA union B.